Hello students, this is Vineeta Singh from St. School Nalia, and today I'm going to explain you class 9 chapter number 3, A Little Girl. Okay, so the title of this story refers to the main character that we will come across, the little girl named Kezia. The theme of this story is the relationship between the children and their parents. And the writer, Catherine Mansfield, wants to tell us that children share a very important bond of love with their parents. Although when children are small, when they are young, they do not feel that their parents love them because their parents are strict sometimes. Many of their actions also seems unjustified. But as children grow up, they realize that all the acts done by their parents were beneficial for them. The parents were concerned for them, and beneath the strictness lies a heart full of love for the children. This bond of love between parents and their children has been highlighted through this story. Okay, so before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. So, here, when we are small, when we are very small, we do not know why our parents are being strict with us. But as we grow older, जैसे जैसे हम लोग mature होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, we realize that they are strict just to make us perfect in our life. Okay, their strictness behind our betterment. Okay, as we all grow older and older, you will realize that in the past, whatever act your parents did were for the betterment, and in fact they really loves you. Okay, there's a story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. So now, what do you mean by will probably find an echo in every home? This means that all the children will feel the same way. So you all can relate to the feelings of little Kezia. हर घर में हर बच्चा ये सबको यही लगता है स्टार्टिंग में जब वो बहुत छोटे होते हैं अपने पेरेंट्स से वो जब डरते हैं जब उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझ रहे हैं हमारी हर बात पे हमें डांट देते हैं हम जो करना चाहते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये हर घर में ऐसा होता है तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पे कि विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम ओके जस्ट लाइक केजिया full of fear towards her father, and later on she understands his behavior and feels that he was concerned and he loved her. All the children also have the same feeling towards their parents, and you can relate the Kezia story with you also. Okay? To the little girl, he was a figure of fear and avoided. Figure to be feared का मतलब होता है ऐसा person जिससे आपको डर लगता है. Okay? So here, who is the figure of fear for Kezia? His father. Okay, her father. Kezia's father was a figure to be feared for her here. Okay, so he refers to the Kezia's father, and the little girl is Kezia. So the opening line of this story indicates the fear that Kezia has for her father, and she is fearful of her father, and she tries to avoid him, and she tries to remain away from him. Okay, every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. Okay, एवरी मॉर्निंग जब भी वो काम पे जाते हैं तो केजिया के फादर क्या करते हैं केजिया के रूम में आते हैं उसे एक कैजुअल किस देते हैं और जिसके रिप्लाई में केजिया क्या करती है उनको बोलती है गुड बाय फादर सो this action of Kezia's father shows his love for Kezia. Okay, and oh, there was a great sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. Okay, glad sense of relief का मतलब होता है feeling relaxed, बहुत ज्यादा उसे तसल्ली relax feel होता है. Fainter and fainter का मतलब होता है time के साथ धीरे धीरे कम होते जाना, आवाज कम होते जाना. Okay, carriages like आप पुराने जमाने में जैसे horse cart वगैरह यूज किए गए थे उनको आप ले सकते हो यहाँ पे. Okay, so carriages like horse cart were means of conveyance using in olden times. So here we can make out the fear that Kezia has for her father. कि उसको जब उसके पापा चले जाते हैं
Her father's carriage was going away from home and he was leaving home, and the sound became fainter and fainter. That means the sound reduced, and Kezia would have a sense of relax at that time. Okay. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. इवनिंग के टाइम पे कैजिया के फादर जब घर आ जाते हैं वापस, उसको उनकी जो बड़ी बहुत ही ज्यादा लाउड वॉइस है वो उनको सुनने को मिलती है, एंड उसकी जो लाउड वॉइस है वो उससे उसको बहुत ज्यादा क्या लगता है, डर भी लगता है। और वो क्या बोलते हैं, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैज नॉट द पेपर कम येट, mother go and see if my paper out there and bring me my slippers. So as Kezia's father returned home, he would start ordering all the different things. He would order that tea should be served in the drawing room. He wanted the newspaper. He would ask his mother to go and see if the newspaper was there outside the room, outside the house, and he would ask her to get him his slipper also. Okay. Kezia mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boot. Kezia mother बोलती है, अगर तुम अच्छी बच्ची हो, तुम एक अच्छी बच्ची हो, तो तुम क्या करो, अपने फादर के बूट्स को रिमूव करो यहाँ से, इन ऑर्डर टू मेक हर ऑबे। उसको सिर्फ ऑबे मतलब अपने पेरेंट्स के जो बोलते हैं उसको ऑबे कर सके, सिर्फ इसीलिए शी वुड से दैट इफ शी वॉज अ गुड गर्ल, कि वो अगर अच्छी लड़की है, देन श्योरली शी वुड ऑबे हर कमांड, तो वो उसकी आवाज को जो वो बोल रही है उसको ऑबे जरूर करेंगे। ठीक है। Slowly, the girl would slip down the stair, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. Okay, slip down का मतलब होता है unwillingly come down quietly. Okay, धीरे धीरे आना, unwillingly मतलब जिसका कोई मन नहीं कर रहा हो. So again we see the Kezia's fear for her father. That is why she would come down the stair quietly and unwillingly. Okay, unwillingly because she did not want to face her father. Okay, she feared of him. By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrified to the little girl. अब आप imagine कर ही सकते हो Cassius father sitting in the drawing room on a sofa wearing his spectacles, and he is looking at Kezia over the spectacles, and now the way he looked at her terrified her. और इसी तरीके का लोग उसको क्या लगता है, बुरा लगता है, उसे डर लगता है. She was horrified because maybe it seemed to be to her that he was staring at her. Okay, so well, Kezia, hurry up and pull out these boots and take them outside. Have you been a good girl today? Kezia अपना काम बहुत धीरे कर रही थी, बहुत स्लोली वो चल रही, तो उसी टाइम पे उसके फादर ने कहा, would the father would tell her to hurry up and remove his boots and keep them out of the room, and then he would ask her if she had been a good girl that day. क्या वो मतलब अभी भी अच्छी, क्या आज के दिन क्या वो अच्छी लड़की है? आई डोंट नो फादर। ओके, तो वो क्या करती है, थोड़ा सा उस टाइम पे स्टटर करना शुरू कर देती है। देन कैसे रिप्लाइड करती है कि मुझे नहीं पता, स्टैमर करने लग जाती है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं होती है, अपने फादर से इतनी बातें नहीं करती है, वो उससे डरती है, तो डर के मारे उसने क्या किया, थोड़ा सा स्टटर करना शुरू कर दिया, हकलाना शुरू कर दिया। ओके, you didn't know, if you stuttered like that, mother will have to take you to the doctor. अगर तुम इस तरीके से स्टटर करोगे तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। ओके, she never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the word properly. So here the writer tells us that the Kezia never stammered while she spoke to others people, but it was only when she talked to her father that she lacked confidence. He is not confident about their speech, and that is why she tried very hard to speak properly and she stammered. Okay, what's the matter? What are you looking so rich about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here Kezia carry up teacup back to the table carefully. Wrist का मतलब होता है unhappy या sad. On the brink of suicide मतलब जो कि अभी अभी सुसाइड कमिट करने वाला हो. सुसाइड का मतलब होता है अपने आप को किल कर लेना. So now Kezia's father looked at her and he feels that something is wrong with her, and he asked her why she is so unhappy. ये हमेशा इतनी unhappy क्यों रहती है? And then he tells her mother that she should teach Kezia to behave in a better way, and she should not appear as if she is
is so unhappy that she about to end her life. So he wants to say that Kezia seemed to be so unhappy with her life that she did not want to live any longer. He hands her his teacup and asks her to place it back on the table. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. So here, this is a feeling, this is a reason that Kezia has for her father. She feels that her father was so big, he was just like a giant. And the writer also says that Kezia felt that his hands, his necks, his mouth were all so huge, so big when she yawned. Yawned का मतलब होता है उबासी लेना. Okay, it seemed as if he was a huge monster. He, whenever Kezia about thinking about her father, she feel that she was thinking about a giant. वो इतने बड़े हैं, उनका मुंह, उनका हाथ इतने बड़े हैं कि उनको देख के उसे ऐसा लगता है कि उनके बारे में सोचना मतलब क्या है. उनके बारे में सोचना मतलब किसी भी शैतान के बारे में सोचना. On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. Every Sunday उसकी grandmother क्या करती थी, उसको drawing room में भेजती थी और बोलती थी तुम अपने father और mother के साथ एक nice talk रखो, मतलब अच्छी बातें करो, अपना time spend करो. But the little girl always found mother reading and father stretching out on the sofa, his handkerchief on his mouth, his feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. Snoring का मतलब होता है सोते टाइम जो आवाज आती है ना खराटे मारने की, उसको बोलते हैं. सो हियर कैज़िया फेल्ट अ बिट नेग्लेक्टेड. उस टाइम पे उसको बहुत ही नेग्लेक्टेड फील होता है कि मतलब उसकी मॉम जो है वो रीड कर रही है बुक, उसके पापा जो है वो मतलब पूरे सोफे पे स्ट्रेच हुए हुए हैं, अपनी हैंकरशिप को मुंह पे डाले हुए और पैरों को अपने वन ऑफ द फेवरेट कुशन के ऊपर रखे हुए. तो मतलब उसको इस टाइम पे बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड फील होता है कि वो वहां उनसे बातें करने आई है और दोनों ही क्या है अपने ही काम में बिजी हैं. She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. Okay, gravely मतलब होता है seriously. So all the while, Cassia's father was asleep. She would just sit on a stool and watch him carefully till the time he would wake up and stretch his body and then would ask the time and looked at her. वो सिर्फ उसी टाइम पे देखती रहती है कि कब वो मुझसे टाइम पूछेंगे. ठीक है? Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. कैसिया के फादर बोलते हैं, उसको कंपेयर किया है किससे, एक छोटे से ब्राउन कलर के आउल से, उल्लू से. ओके, एंड ही वुड से दैट कैसिया वाज स्टेयरिंग एट हिम जस्ट लाइक एन आउल डज. जिस तरीके से उल्लू घूरता रहता है उस तरीके से वो उनको घूरती रहती है. One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. Okay, now Kezia was not well. She had a cold and so she was supposed to stay at home. So her grandmother suggested that she was at home and her father's birthday was approaching. She could make a birthday gift for him. She asked Kezia to make a pin cushion for him, and she also gave her a yellow colored fabric of silk to make the cushion also. Laboriously with a double cotton, the little girl stitches three sides. Laboriously मतलब होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्टी के साथ, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के केजिया ने क्या किया, उस डबल कॉटन की जो येलो कलर का सिल्क था उसको क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया तीनों साइड से. बट व्हाट टू फिल इट विद, दैट वाज द क्वेश्चन. अब लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन क्या था कि इसके अंदर क्या भरा जाए. ओके, द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्कार्फ्स. ओके, वंडर इनटू मतलब होता है कि वेंट. ओके, बाय चांस. स्क्रैप का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस क्लोथ्स के या पेपर के. ठीक है, तो so Kezia was confused that what should she use to fill the cushion with. As her grandmother was out of in the garden, she was just looking for something. She reached her mother's bedroom and she was looking for bits of paper or the cloth to stuff in the cushion. Cushion के भरने के लिए या तो कोई clothes मिल जाए या paper मिल जाए, कुछ भी मिल जाए जिनको भर के वो क्या कर सके, four side को भी सिल सके. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case. Then sewed up the fourth side. Now Kezia is a very small girl, very little girl. She is very young. And now what she do? On the bed table, she found a heap of sheets of paper. So she just gathered all the sheets, they tore them, then stuffed those pieces of paper into the cushion, and then
she states the fourth side of the question also. Okay, she is preparing the birthday gift for her father. So many of you can relate the Kezia's act. Many children do such things unknowingly. They do not intend to create any mischief or harm anyone, but they end up doing it. Now Kezia has torn some important papers. Okay, that night, there was a hue and cry in the house for the great speech of the port authority has been lost. Hue and cry मतलब होता है angry protest, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में सब लोग थे. Now there was a lots of shouting in the house because Kezia's father ने जो speech prepare की थी port authority के लिए, मतलब एक particular meeting है उसके लिए, तो वो उनको नहीं मिल रही है, वो खो गई है. Now we all know where the speech has gone. हम सबको पता ही है कि वो speech कहाँ गई होगी. It has been torn into tiny pieces and Kezia has stuffed it into the cushion. ठीक है. Rooms were searched, servant questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Family में सभी लोग सर्च कर रहे हैं इधर उधर. Servants को पूछ लिया गया है. किसी को भी नहीं पता कि वो sheets of paper कहाँ गए. और finally mother ने क्या किया, Kezia के room में गई. Okay, Kezia, I suppose you didn't see some papers on table in your room. So Kezia, mother asked her that did she see some papers lying on a table in her mother's room? Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. Now here we get to see that Kezia is an innocent girl. She did not intend to harm anyone. She was just preparing her birthday gift, and so very truly she tell her mother that she found some pieces of paper and she needed them to stuff into the cushion. So she torn them and prepared her surprise gift. That is the birthday gift that she had prepared for her father. Unknowingly, Kezia had done a great disaster. What screamed mother, come straight down to the dining room from instant. Now Kezia mother is so furious when she come to know that Kezia has torn the speech that her father is looking for. And so she ordered Kezia to come down into the dining room and at very moment. And she was dragged down to where father was pacing to and fro hand behind him. So now this is a full of tensions and a very important document has been lost also. So the Kezia torn it into the pieces and now Kezia will be scolded for the mischief that she has done. उसने जो गलती किया उसके लिए अभी उसको क्या किया जा रहा है, बहुत ही बुरी तरीके से डांटा जा रहा है. Well, she had sharply, mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, 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 she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child put to bed this instant. Damn thing means होता है कि अपने anger को express करना. Now, why is Kezia's father referring to the cushion that she has prepared as a damn thing? Damn thing means ऐसे चीज जिसको कि कोई भी मतलब जिसको गुस्सा दिखा रहा है, जिसपे मतलब ऐसी जिसका कोई यूज नहीं है. Because Kezia ने क्या किया था, उसके अंदर उसके important documents को torn कर दिया था, फाड़ दिया था. Now he is very angry with Kezia and he stared at her and asked her if she has torn the paper. Kezia was so scared and she was again stammered and say that father ordered mother to go and bring that cushion downstairs and asked her to put Kezia to bed at that very moment. Okay, crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Shadowed room means होता है कि it was a dark and light outside from the room coming inside the room, and sad little pattern means होता है sad environment in the room. Okay, so the Kezia wanted to justify her action because she was not innocent. She did not mean to harm her father. She was just preparing a surprise gift for him. And Kezia was very sad. She had been happy that she had prepared a surprise for her father, but on the other hand, accidentally he committed a disaster for him. I am going to beat you for this, he said. Oh no, 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 she screamed, hiding under the bedclothes. Bedclothes के पीछे छुप के, और वो बोलती है कि नहीं नहीं, तुम आप ऐसा मत कीजिए, आप मुझे मत मारिए. He pulled them aside. उसने वो उसको हटाया. Sit up, he ordered. उसने कहा कि तुम बैठो and hold out your hands. अपने hands को उसको पकड़ा. You must be taught once and for all not to touch what does not belongs to you. तुम्हें ये सीखना ही होगा कि तुम्हें उन चीजों को हाथ नहीं लगाना है जो तुमसे related नहीं है. But it was for your birthday. मैंने ये आपके birthday के लिए किया था. Down came the ruler on her little pink palm.
और उसी टाइम पे क्या किया, कैसा कि फादर ने अपने मतलब अपने हाथ से उसको हाथ पे उसके रूलर से उसको मार दिया। ठीक है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. Clung का मतलब होता है attach होना. Okay. Now Kezia was so afraid. She had got beating, and her father had hit her small little palms with a ruler. And many hours later, her grandmother wrapped her in a shawl and was to trying him, pacify him. उसे अच्छा फील कराने के लिए उसको अपने रॉकिंग चेयर पे बैठा के उसको शॉल में लपेट के उसको अच्छा फील करा रही थी। What did God make father for? She sobbed. वो सिसकियां लेते हुए बोली कि भगवान ने फादर क्यों बनाए? Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep. That you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. That time Kezia's grandmother was trying to pacify her. उसको मतलब बहलाने की कोशिश कर रही है और बोल रही है कि ये हैंकी लो, अपने नाक बहते हुए नाक को साफ करो और सोने की कोशिश करो। मैं केजिया मैंने आपके फादर से बात करने की कोशिश की थी, बट आपके फादर जो है वो इस टाइम पे अच्छे मूड में नहीं है, अपसेट है, इसीलिए मैंने उनसे बात नहीं की। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, सी क्विकली put both hands behind her back and a red color flew into her cheek. Now Kezia's grandmother had told her to go to sleep, that by morning and she would forget the beating that her father gave her. But Kezia never forget the beating that she had got. Whenever she saw her father approaching, she would keep her hand behind her back because she felt that maybe he would hit her again, and red color flew into her cheek. जब भी वो उसको देखती है तो उसको क्या होता है, उसको लगता है उसके फादर उसको दोबारा से क्या करने वाले हैं, पीटने वाले हैं। तो उसी टाइम पे वो क्या करती है, अपने हैंड्स को पीछे कर लेती है और उसके चिक्स जो है वो रेड हो जाते हैं। The McDonald lived next door. They have 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. Tag जो है वो एक ऐसा गेम होता है जो जैसे कैच कैच खेलते हैं ना, उस तरीके का। एक मैकडोनल्ड जो उनके दूसरे डोर के पास रहते हैं, उनके 5 बच्चे हैं और अपने जो एक छोटा सा होल है उसके घर से वो वहां से उनको देख रही है कि वो उनका जो फादर है वो अपने बच्चों के साथ किस तरीके से टैग खेल रहा है इवनिंग के टाइम पे। द फादर विद द बेबी माओ 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 को जो छोटा बच्चा है उसको अपने शोल्डर्स पे रख रखा है। 2 लिटिल गर्ल्स जो कि उसके कोट के पॉकेट्स पे इधर उधर रन कर रही हैं। सब लोग हंस रहे हैं। वन शी सॉ द बॉय टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। हमेशा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं उस बच्चे को जो 5वां बच्चा भाग रहा है। तो मतलब सब लोग हंस रहे हैं, कितना अच्छा उसको फील हो रहा है। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट शॉट्स ऑफ फादर्स। उस टाइम पे उसने डिसाइड किया कि एक टाइप के नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं फादर। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू द हॉस्पिटल। एक दिन उसके मदर की जो थी तबीयत खराब हो गई थी, तो इसीलिए उसके मदर और ग्रैंडमदर जो है दोनों हॉस्पिटल में एडमिटेड हॉस्पिटल गए थे। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइज द कुक। कुक के साथ वो लिटिल गर्ल जो थी वो घर पे अकेली थी। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, बट व्हाइल एलाइज वाज पुटिंग हर बेड शी ग्रो सडनली अफ्रेड। लेकिन जब एलाइज ने उसको सोने के लिए बोला, रात हो गई थी उस टाइम पे, तो वो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा डर गई थी। व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड। उसने कहा अगर मुझे नाइटमेयर आया, तो नाइटमेयर मतलब होता है बैड ड्रीम, अगर मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूंगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट विस्परी। मैं अकेली यहाँ नहीं सो सकती हूँ, मुझे जब भी बुरे सपने आते हैं तो मेरी ग्रैंडमदर मुझे अपने बेड पे ले जाती है, मैं अकेली नहीं सो सकती हूँ। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलाइज। एलाइज ने कहा तुम जाके सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स निकाल दिए हैं। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पापा। ओके, तुम चिल्लाना भी मत और ना ही तुम अपने पापा, बेचारे पापा को उठाने की कोशिश करना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, वो सेम जो बुरा सपना था उसको आ गया। द बच्चर, एक चोर विद अ नाइफ एंड अ रोप, जिसके हाथ में एक चाकू और एक रस्सी है, वो केम नियर एंड नियर, वो जिसके पास आता जा रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, बहुत ज्यादा भयानक स्माइल की तरह स्माइल कर रहा है। व्हाइल शी could not move, could only stand still, crying out grandma grandma। और वो उस टाइम पे मूव भी नहीं कर पा रही है और वो सिर्फ जोर जोर से चिल्लाने लगी ग्रैंडमा दादी माँ करके। She walked shivering to see father beside her bed, a candle off in his hand।
उसी टाइम पे वो कांपते हुए उसने देखा कि उसके पापा जो है उसके बेड के पास खड़े हैं और उनके हाथ में क्या है, एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। उन्होंने कहा क्या हुआ? वो बच्चा नाइफ, आई वांट अ ग्रैनी। वो चोर उसके चाकू, मुझे ग्रैनी चाहिए। ही ब्लो आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। उन्होंने अब मोमबत्ती ब्लो आउट किया, वहां से नीचे झुके और उसको क्या किया, चाइल्ड को अपनी गोद में लिया और उसके साथ पूरे बिग बेडरूम से निकल के अपने बेडरूम में लेके गए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड के ऊपर न्यूज़पेपर रखा था। ही पुट अवे द पेपर, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। पेपर को साइड में करके और उसको बेड पे लेटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके साथ में ही लेट गए। हाफ asleep, still with the butcher smile all about her it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. उस टाइम पे भी उसे स्टिल मतलब आधी नींद में है और उसे वही जो चोर है उसकी स्माइल उसे दिखाई दे रही है। वो डर रही है, वो मतलब ऐसे क्राइम टाइप कर रही है और वो और ज्यादा अपने पापा के क्लोज आ रही है, उनके हेड के पास, उनके आर्म्स के पास में, और बहुत टाइटली उनकी शूट उसने पकड़ लिया है। ठीक है, देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। और अब उसके लिए डार्क जो है, अंधेरा जो है, कोई मैटर नहीं रखता है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माय रग एंड लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। फादर ने कहा तुम अपने पैर मेरे पैरों पे रगड़ सकती हो, रब कर सकती हो और तुम्हें गर्मी मिलेगी इससे। Tired out, he slipped before the little girl. A funny feeling came over her. So, as Kezia father was very tired, he slipped before she did. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing, and she stared suddenly and sighed. Now here Kezia realized her mistake, and she had affection toward her father. She felt that her father was a poor man, बेचारे इंसान। ही वर्क सो हार्ड, वो कितना काम करते हैं। अब वो उसके लिए इतने बिग नहीं थे जितने पहले थे। अब वो अपने फादर को समझने की कोशिश कर रही है कि वो कितना वर्क हार्ड करते हैं, वो कितने टायर्ड हो जाते हैं जब वो सोने के लिए जाते हैं, तब तक वो इतने टायर्ड हो जाते हैं, इसीलिए वो अपने मतलब कैजिया के साथ खेल नहीं सकते हैं मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह। उनके फादर का हर्ट कितना बड़ा है, फुल ऑफ लव भरा हुआ है। शी रियलाइज दैट शी हैज torn off his important document, the speech that he has written, and all his this realization makes sure take a deep breath. She realized that she had been wrong, and that is why her father had beaten her. He had been so strict with her. Okay, what's the matter? Asked her father. Another dream. अब क्या हुआ? दोबारा से ड्रीम आ रहा है? Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big hurt you have got, father dear. कैजिया ने रिप्लाई किया कि father, she Kezia replied to her father that she had placed her head on the father's head and she could hear his heartbeat. And she complimented her father that he had a big heart. So Kezia is showing her love for her father as she had realized that her father also loved her. Okay, so that's all in your this chapter. I hope you understand. You make it applicable to in your life also. Every time, not parents are wrong, behave like a mature person also. Okay, if you find it useful, then please share and subscribe my channel. Thank you so much.